Hello students, today I am going to teach you a new chapter, coordinate geometry. Students, in a previous class we have studied geometry which is called Euclidean geometry, and now we will study the analytic geometry where the position of the point where the position of a point expressed by a specific number which is called coordinates. Students, you know what is coordinate? The combination of abscissa and ordinate is called coordinate. Due to the use of a coordinate in analytic geometry, this is called coordinate geometry. Okay, students, our first point is Cartesian coordinates. Okay, so look at the board. Y and y dash, x and x dash. When two perpendicular lines are intersect at point O is called origin. Okay, and these lines are coordinate axis. Okay, the horizontally line is x axis and the vertically line is y axis. Okay, x axis and y axis. Understood? Students, these axes are divides the plane in 4 equal parts. ये axis इस plane को 4 equal parts में divide करता है. Okay, that is called a quadrant. So it is first quadrant, it is second quadrant, and it is third quadrant, and last one is fourth quadrant. These are quadrants. Okay, x o y first quadrant, x dash o y second quadrant, and x dash o y dash it is third quadrant, and x o y dash it is fourth quadrant. Okay, students, in a first quadrant the value of x and the value of y both are positive. Okay, because यहाँ पे क्या नंबर रहते हैं 1 2 3 4 so on. Okay, and on y axis 1 2 3 4 5. Okay, now move on next. It is a second quadrant. In the second quadrant the value of x is negative and the value of y is positive. Okay, because on x axis -1 -2 -3 -4, and on y axis +1 2 3 4 5. Okay, now move on third quadrant. In a third quadrant the value of x axis is negative and the value of y axis is also negative. Okay, because on y axis -1 -2 -3 -4 -5 so on. Okay, now last one is fourth quadrant. In a fourth quadrant the value of x is positive and the value of y is negative. Okay, समझ आ गया अच्छे से? Students, in a coordinate geometry there are many types of question. So first question is distance between two points. Two points के between a distance find करना है. So we have a formula for finding the distance between two points. Distance formula is square root x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is a distance formula for finding the distance between two points. Okay, so we will understand with the help of a example. So let us take an example. Find the distance between points 2, 3 and 5, 6. Okay, find the distance between points 2, 3 and 5, 6. In 2 points के between distance find करना है. Okay, so we have to solve. P and Q.
Our first point denoted by P and second point denoted by Q, and the coordinate of P is 2, 3, and the coordinate of Q is 5, 6. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट पॉइंट के x की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट के x की वैल्यू को x1 से डिनोट करेंगे और y की वैल्यू को y1 से डिनोट करेंगे. ओके, एंड सेकंड पॉइंट के x की वैल्यू को x2 से डिनोट करेंगे और y की वैल्यू को y2 से डिनोट करेंगे. ये सेकंड पॉइंट है, इस वजह से x2 एंड y2. ये फर्स्ट पॉइंट है, सो x1 एंड y1. अंडरस्टूड? नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. Okay, now put the value according to formula. x2 is 5, so 5 minus x1 is 2 whole square plus y2 is 6. The value of y2 is 6, so 6 minus y1 3 whole square. Now 5 minus 2 we get 3, so square of 3 plus 6 minus 3 we get 3, so square of 3. Okay, now move on next step. Square of 3 we get 9 and square of 3 we get 9. Now sum of these number 9 plus 9 18. 9 plus 9 18. Students, 18 is not a perfect square number. 18 is not a perfect square number. So prime factorization of 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Okay, so we get 3 root 2. 3 root 2, it is our answer. Okay, it means distance between 2 points 2, 3 and 5, 6 is 3 root 2. इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कितना हो गया? 3 root 2. समझ आ गया अच्छे से? इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो. अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, लेट अस टेक इन वन मोर एग्जांपल. ओके, सो लुक एट द बोर्ड. इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 3 and 5, 7 is 5. Okay, then find the value of x. If distance between points, first point x, 3, first point x, 3, इसमें x की वैल्यू नहीं दे रखी. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट 5, 7 एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5. उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना है? 5. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा बिकॉज हमें डिस्टेंस गिवन है. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व. First point P and second point Q. Coordinate of P is x, 3 and coordinate of Q is 5, 7. Okay, students, you know very well the value of x is x1. First point के x की वैल्यू x1 and y की वैल्यू y1. First point के और second point के, yes tell me, x2 and y2. Okay, x2 and y2, and the distance between 2 points is 5. Okay, so PQ equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, it is a formula for finding the distance. PQ is 5. Okay, now square root x2, it means 5. 5 minus x1 x whole square plus
y2 is 7 minus y1 is 3 whole square. Okay. Now move on next step. 5 equal to 5 minus x whole square as it is plus 7 minus 3 4 square. Okay. Now 5 equal to square root 5 minus x whole square as it is plus square of 4 we get 16. Okay. Now ये स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड में जाएगा इक्वल के, तो क्या बना लेगा स्क्वायर. सो वी गेट स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 16. ओके. नाउ स्क्वायर ऑफ 5 25 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर. एल्जेब्रिक फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर यूज होगा. एल्जेब्रिक फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको करेंगे. a स्क्वायर इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इट मीन्स 5 इंटू b इट मीन्स x प्लस 60. ओके. नाउ 25 as it is equal to square of 5. 25 plus x square as it is minus 5 to jar 10x plus 16. Okay, students, 25 cancel out. We get x square minus 10x plus 16. X square minus 10x plus 16. It is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Now factorize. Factorize आपको सिखा रखा है, तो कैसे करेंगे. Next step is x square. We get factors minus 8 and minus 2. So we have to write minus 8x and minus 2x plus 16. These are two factors minus 8 and minus 2. Okay. So students, what is the common in bottoms? X. We get x minus 8. Okay. And what is the common in bottoms? Minus 2. So we get x minus 8. Okay. Now x minus 2 and x minus 8. These are two factors. These are two factors. Now x minus 2 equal to 0 and x minus 8 equal to 0. Okay. So here x equal to 2. X equal to 2 and x equal to 8. x की वैल्यू क्या आ गई 2 भी और क्या आ गई 8 भी. ओके. सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 and 8. ये दोनों हो सकती है. x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 8 भी हो सकती है. समझ आ गया अच्छे से. सो x इक्वल टू 2 and 8. इट इज आवर आंसर. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 and 8. Have you understood every step of this question? Okay.